Good morning, my dear children. Myself, Miss Chelsea Rabre, and today we are going to study subject Mathematics for Standard 3rd. So, student, you can refer this combined book number 2. Okay? Yes, I am teaching you from the combined book number 2. तो बच्चों, आप ये बुक रेफर करना. ओके? दिस इज आवर combined book number 2. So student, can you tell me in our last lecture what we studied? Yes, we saw how to do multiplications, right? मतलब हमने क्या देखा लास्ट लेक्चर में? Yes, हमने पढ़ा multiplication, बराबर? And we saw some word problems related to the multiplication. So student, in today's lecture, we are going to continue with the word problems. Okay? तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम word problems कंटिन्यू करेंगे. Okay? These word problems are related to multiplication. Okay? Yes. So student, in the last lecture, I taught you the first sum which is on page number 63. Right? Yes. So in today's lecture, we are going to see the next word problems. Okay? Yes. So now let us see the second word problem. Okay? That is on page number 63. तो बच्चों 63 पेज नंबर ओपन कीजिए अपने बुक नंबर 2 का. Yes. So student, what is the second question? If 9 laddus, so before that we will write our lesson's name on the blackboard. That is word problems of multiplication. Okay? Page number 63. So student, what is the second question? If 9 laddus can be put in one box, how many can be put in 7 such boxes? Understood students? हमें यहाँ क्या पूछा गया है? अगर 9 लड्डू एक बक्से में हम रख सकते हैं तो फिर हम 7 बक्से में कितने लड्डू रखेंगे? So now we have to find out how many laddus can be put in 7 boxes. Understood? Yes. So first of all, let us write what is given us. Okay? So what is given to us? 9 laddus in one box. ओके? हमें क्या दिया गया है? हम एक बॉक्स में 9 लड्डू रख सकते हैं और हमें क्या पूछा गया है? हाउ मेनी कैन बी पुट इन 7 सच बॉक्सेस. इसका मतलब है हम 7 बॉक्स में कितने लड्डू रख सकते हैं. तो हम लिखेंगे how many laddus in 7 boxes. हम यहाँ क्वेश्चन मार्क्स देखेंगे. ओके? लिखेंगे. ओके? यस. सो स्टूडेंट, दिस इज आवर स्टेटमेंट. दिस इज आवर स्टेटमेंट. ओके? यस.
सो स्टूडेंट नाउ व्हाट इज आस्क, हम 7 बक्से में कितने लड्डू रखेंगे? इसके लिए हमें क्या करना होगा? वेरी गुड, इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, दैट इज 9 into 7. ओके, लेट्स मल्टीप्लाई. 9 laddus in one box, right? There are 9 laddus in one box. We are going to multiply this with 7. Okay? We will write here in 7 boxes how many laddus? We will put your question mark. So student, tell me what is 9 into 7? तो बच्चों मुझे बताओ 9 7 जा इसका आंसर क्या होता है? Yes, 9 7 जा is 63, right? तो बच्चों our final answer is 63. Therefore 63 laddus in 7 boxes. Understood students? एक बॉक्स में 9 लड्डू है, हमें पूछा गया है 7 बॉक्स में कितने लड्डू होंगे? तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर है देयर आर 63 लड्डूस इन 7 बॉक्सेस. अंडरस्टूड? एक बॉक्स में कितने लड्डूस? 9 लड्डूस. तो 7 बॉक्स में होंगे 63 लड्डूस. Understood? Yes. For this we have done multiplication, and this is a sign of multiplication. Understood? Yes. So student, now let us see 2 more examples of word problems. Student, now let us solve the third word problem. Okay? तो बच्चों पेज नंबर 63 से मैंने 2 वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं. ओके, एंड फॉर योर होमवर्क यू ऑल हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 and 4 on your own. Okay? Yes. So now I will teach you word problems from the page number 64. Okay? Yes. That is, I will teach you the question number 5. That is on page number 64. Okay? Page number 64. तो बच्चों हमें क्या दिया गया है? 1 guava cost ₹6. How many money will be needed to buy 1 guava for all of 4 friends? Tony, Sonu, नंदू एंड सलमा. तो बच्चों हमें क्या दिया गया है? एक गुआवा की कीमत है ₹6. So we will write here our statement. 1 guava is equal to ₹6. एक गुआवा की कीमत है ₹6. और यह हमें क्या दिया गया है? 4 दोस्त है, सोनू, नंदू, सलमा और टोनी, और इन चारों को यह गुआवा खरीदना है. लेकिन हमें अब बताया गया है कि कितने पैसे लगेंगे. हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाय 1 गुआवा फॉर ईच ऑफ 4 फ्रेंड्स. तो बच्चों एक गुआवा है और उसकी प्राइस है ₹6. और यह हमें क्या कहा गया है? 4 दोस्त है और सबको एक एक गुआवा खरीदना है. तो बच्चों हमें पूछा गया है कि सबको कितने पैसे लगेंगे.
तो हम लिखेंगे आर सेकेंड स्टेटमेंट, दैट इज हाउ मच money will be needed to buy one guava for each friend. Okay? तो बच्चों हमें क्या दिया गया है, एक गुआवा की कीमत है ₹6 और 4 दोस्त है और इन 4 दोस्तों को एक एक गुआवा खरीदना है और एक गुआवा की कीमत क्या है, ₹6. So now we have to multiply. We have to multiply the cost of one guava into 4 friends. Okay? That is 6 into 4. Okay? 6 is the cost of one guava. And 4, there are 4 friends to buy guavas. Right? Yes. So बच्चों मुझे बताओ what will be our next step? Yes, we are going to multiply both the numbers. Right? तो मुझे बताओ what is 6 into 4? 6 into 4 इसका आंसर क्या होगा? 6 4s is 24. Right? तो बच्चों हमारा आंसर है ₹24. Understood? ₹24. Our final answer is ₹24 will be needed to buy guavas for each of the 4 friends. Understood? That is one guava and उसकी कीमत है ₹6 और एक साइड में 4 दोस्त है बराबर और उन सब 4 दोस्तों को वह गुआवा खरीदना है और एक गुआवा की कीमत क्या है, ₹6 और उन सब 4 दोस्तों को एक एक गुआवा अपने लिए खरीदना है बराबर. Yes. So here we have multiplied 6, that is cost of one guava, and into 4, that is there are 4 friends. So I have multiplied 6 into 4. तो इसका आंसर आएगा 24. Understood? So student, therefore ₹24 is required to buy 4 guavas for each 4 friend. Understood? Yes. So student, now we are going to see one more example of what problem which is related to multiplication. Okay? Yes. Student, now let us solve one more sum which is on page number 64, that is 7th question. Okay? And for your homework, you all have to solve question number 6 and 8 on your own. Okay? Yes. So now let us solve the question number 7. So students, what is given? There are 8 crates, 6 mangoes in 1 crate. तो बच्चों crate इस शब्द का अर्थ है बास्केट. ओके? उन्होंने हमें कहा है कि उनके पास 8 बास्केट है बराबर. कितने बास्केट है? 8 बास्केट. और उन्होंने कहा है कि 6 मैंगोस इन 1 बास्केट. दैट इज स्टूडेंट्स
First of all, let us write the statement, that is, they have 8 baskets, or we can say crates. Okay, they have 8 baskets and they are telling us that 6 mangoes in 1 crate, that is 6 आम एक टोकरी में होंगे, बराबर। तो बच्चों, हमें यहां यह फाइंड करना है कि 8 टोकरियों में कितने आम आएंगे। ओके, यस। तो बच्चों, इन इजी वर्ड्स, दे हैव 8 baskets. Okay, and there are 6 mangoes in 1 basket. There is 8 basket. There are 6 mangoes in 1 basket. So now we have to find out how many mangoes are there in 8 baskets. Understood? For that, we have written the first statement, that is 8 baskets, right? There are 8 baskets. And what is other given? 6 mangoes in 1 basket. So now we have to find out how many mangoes there are in 8 basket. Okay? For this, we have to multiply, right? We have to do multiplication, that is 8 into 6, right? So we will do the multiplication, that is 8 baskets we have, and there are 6 mangoes in 1 basket. So now what we will do? Yes, our second step is multiplication. 8 into 6, right? तो बच्चों, मुझे बताओ, what is 8 into 6? 8 6 क्या होता है? You have learned the tables, right? तो बच्चों, मुझे बताओ, what is 8 6? 8 6 is 48, right? तो बच्चों, हमारा आंसर है there are 48 mangoes in 8 crates. Crate यानी basket. So there are 48 mangoes in 8 crates. Understood? आपको समझ में आया? तो बच्चों, हमारे पास 8 टोकरियां है, बराबर, और एक टोकरी में 6 आम हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है? 8 टोकरी में कितने आम आएंगे? तो बच्चों, हमने 8 into 6 किया और हमें आंसर मिला 48. तो बच्चों, हमारा फाइनल आंसर है there will be 48 mangoes in 8 baskets. Understood? So students, the question number 6 and question number 8 you will solve for your homework on your own, and also the question number 3rd and 4th, which is on page number 63, you will solve on your own. That is 7 days in 1 week. So how many days in 4 weeks? This question, and 8 tiles in 1 row. How many in 3 rows? And on page number 64, that is 6 teams, 9 players in each teams, and 8 to 1, that is if 1 orange costs ₹8, what is the cost of 8 oranges? तो बच्चों, आपको ये 4 सम अपने आप सॉल्व करने हैं।
Okay? And for your oral homework, you all have to complete page number 63 and 64. Okay? Students, if you find any difficulties while solving this word problem, you can ask me. Okay? Yes. So students, in the next lecture, we are going to study the properties of multiplication, which is on page number 65. Okay? Yes. So, we will meet in the next lecture with another new lesson, that is properties of multiplication. Okay? Yes. Till then, stay safe and stay home. Thank you.